गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सी एम सरफराज अहमद। हमने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर का मतलब एरर्स का मतलब यानी कि जो भी हमने गलती कर दी है उसको हमें ठीक करना है, तो रेक्टिफाई करना है। उसको राइट एंट्री हम के थ्रू हमें पास आउट करनी है। जो भी आपकी गलती हो रखी है, या तो आपने रॉन्ग एंट्री कर दी होगी, या फिर कुछ मिस हो जाता है, या फिर हमने ना उसको एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी है। तो वो जो भी हमारे जो एरर हो रखे हैं, जो भी हमने गलतियां कर रखी है, उसको हमें ठीक करना है। ये बता रखा है, एवरी कंसर्न इन इंटरेस्टेड इन ascertaining its true profit and financial position at the closing of the trading year, but in spite of the best efforts of the bookkeeper and accountant, certain errors are committed in the recording of the transaction which affect the financial accounts of the concern. It therefore become at most important for the bookkeeper and accountants to locate such error and rectify them so that the correct profit and financial position of concern may be ascertained. So, whenever error in accounting record come to notice, they should be rectified without waiting till the end of the accounting year when the trial balance is to be prepared. इस पूरे मतलब ये बता रखा है, यानी कि जब भी हमें ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करते इस पीरियड तक का, यानी कि स्टार्टिंग जब हमारा फर्स्ट ईयर, जब हमारा ईयर जब स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्ट, तो यहाँ से इसके बीच में ट्रायल बैलेंस बनाने तक के, तो इसमें यानी कि जो भी गलती हो रही है उसको हमें ठीक कर लेना है, ताकि यह ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हमारा जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में है, और जो बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन जो शो करता है वो हमारा ठीक दिखा है। स्टेजेस एरर, यानी कि एरर है ना, हो सकती है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग प्रोसेस एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल, या तो जर्नल के थ्रू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ error may be happen at this stage: error of principal, error of omission, error of commission at the stage of posting the entries, यानी कि जब एंट्री को हम पोस्ट करते हैं, मीन्स यानी कि जर्नल से जब हम लेजर में जब पोस्ट करते हैं, तो उस केस में हमसे यानी कि जो गलती हो सकती है, या तो वो पार्शियल एरर हो सकता है, या फिर कंप्लीट का मतलब यानी कि हमने पूरी की पूरी एंट्री वो गलती कर दी है, या फिर एक अमाउंट हमने डबल एंट्री होता है तो उसका एक इफेक्ट हमने लेजर में दिखाया, दूसरे का इफेक्ट नहीं दिखाया। उसके बाद आता है आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन हमारा ये बताता है पोजीशन टू रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ कमीशन, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, जैसे हमने बिल्डिंग परचेज किया, लेकिन हमने उसको परचेज अकाउंट में दिखा दिया, जो कि हमारा ये असेट्स था, और उसको हमने परचेज में दिखा दिया, यानी कि एक तरह से गुड्स में। ऐसे आपका पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, मीन्स जैसे डिस्काउंट रिसीव का होता है एंट्री, ये हमारी है क्रेडिट साइड की होती है, लेकिन उसको हमने डेबिट में डाल दिया, तो ये हमारा पोस्टिंग यानी कि पोस्ट करते हुए रॉन्ग साइड में हमने शो कर दिया। फिर पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, मान लो जैसे कि आपका कोई अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव का ही, वो 10,000 का था, लेकिन अब जल्दीबाजी के चक्कर में अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो 1,000 कर दिया, यानी कि एक जीरो कम कर दिया, तो उस केस में ये गलती हो जाती है। फिर एट द स्टेज ऑफ द बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट, रॉन्ग टोटल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जब टोटलिंग जब करते हैं लेजर्स की, तो यहाँ पे यानी कि गलती टोटल करने में आ जाती है, और ऐसी बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ये सारी गलती होती है।
एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो उस केस में यहाँ पे भी गलती हो जाती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। अब एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, टेकिंग रॉन्ग अमाउंट और टेकिंग टू रॉन्ग साइट, ये सारा का सारा हमारा कमीशन के अंदर में आ जाता है। ओमिशन का मतलब हो जाता है भूल जाना, कि हमने वो एंट्री नहीं डाली है। ऑन द अबव बेसिस वी कैन क्लासीफाई द एरर इन 4 ब्रॉड कैटेगरी। इसको 4 मेन कैटेगरी में बांटा गया हुआ है, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। और एक एक करके हम इसको देख लेते हैं, कौन से एरर कहाँ पे फाइंड आउट करे जाते हैं। Basically, errors are of 2 types. Error of principle, error of principle. When a transaction is recorded in contravention of accounting principle, like treating the purchase account of an assets as an expense, and it is error of principle. In this case, there is no effect on the trial balance since the amount are placed on the correct side. मीन्स अगर हमने बिल्डिंग अगर परचेज करी है तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड, तो बिल्डिंग को तो हम डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। हाँ, अगर इस हमने गलती क्या कर दी, बिल्डिंग की बजाय हमने वो परचेज मीन्स वो हमारा एक्सपेंस गुड्स का हमने दिखा दिया, तो वो भी तो डेबिट साइड में ही आएगा। तो वही चीज बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि करेक्ट साइड में करते हैं थ्रू इन ए ring account. Suppose on the purchase of typewriter, the office expenses account is debited. The trial balance will still agree. मतलब ये अगर टोटल करेंगे तो ये दोनों आप तभी भी बराबर होगा। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो प्रिंसिपल का सिंपल सा ये है कि एक इफेक्ट इसका पीएनएल में आता है और दूसरा बैलेंस शीट को जो इफेक्ट करे, ऐसी एंट्री यानी पीएनएल में रिकॉर्ड करती है जो कि थी बैलेंस शीट का आइटम, तो एक ऐसी एंट्री को वो हमारा प्रिंसिपल एरर में आ जाता है। फिर क्लरिकल errors, these errors arises because of mistake committed in ordinary course of accounting work. These are 3 types, एक तो error of omission, error of commission और compensating error। जो क्लर्कल एरर होता है मीन्स मतलब जो अकाउंटेंट से होते हैं, मतलब ये कहीं पे अमाउंट अगर 10,000 का था तो वो 1,000 डाल दिया, कि कोई डेटर का नाम था राम जो कि हमारा डेटर था, उसका उसको उसने उसको क्रेडिटर बना दिया, ऐसे कुछ एरर होते हैं। एरर ऑफ कमीशन, इफ द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शली omitted from the books of accounts, it will be a case of omission. Example would be not recorded a credit purchase of furniture or not posting an entry into a ledger। यानी कि हमने परचेज करा फर्नीचर, उसको रिकॉर्ड नहीं करा या फिर एंट्री को हमने गलत पोस्ट कर दिया। एरर ऑफ कमीशन, इफ एन अमाउंट is posted in a wrong account or it is written on the wrong side, या तो रॉन्ग अमाउंट डाल दिया यानी कि 10,000 की जगह 1,000 कर दिया, या फिर रॉन्ग साइड डाल दिया हो, और ऑन ए टोटल ऑफ ए रॉन्ग एंड रॉन्ग बैलेंस is stuck, it will be a case of error of commission. Compensating error, if the effect of error committed cancel out, the error will be called compensating error. The trial balance will agree. Suppose an amount of rupees 10 received from A is not credited to his account and the total of the sales book is B. The total of the sales book
is rupees 10 is excess. The omission of credit to A's account will be made by the increased credit to the sales account. From the another point, view error may be divided into two categories. First one is those affect the trial balance because the error's trial balance does not agree. Wrong casting of subsidiary book, wrong balancing of कास्टिंग का मतलब यानी कि उसके अमाउंट में कमी कर दे, मतलब यानी कि वो अमाउंट जैसे मान लो 9000 का था, आपने उसको 900 में कर दिया, मीन्स यहाँ पे जो अमाउंट जो कम है वो इतने से कम हो रखा है, इट इज 8100. फिर पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन ए रॉन्ग साइड, फिर पोस्टिंग रॉन्ग posting, that is writing the wrong amount, omitting to post an amount from a subsidiary book, omitting to post the total of subsidiary books, omitting to write the cash book balances in the trial balance, omitting to write the balance of an amount of an account in the trial balance, writing a balance in a wrong column of the trial balance, totaling the trial balance wrongly. The errors that do not affect the trial balancing are following: omitting an entry altogether from the subsidiary books, making an entry in the wrong subsidiary books, posting an amount in a wrong account but on the correct side, that is an amount to be debited to A is debited to B, trial balance will be agree. A chart is this type error. Errors: clerical error और error of principle. क्लरिकल एरर में आपका ये आ जाता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर. एरर ऑफ प्रिंसिपल का में आपका ये यानी कि परचेज आपने फर्नीचर किया लेकिन इसको आपने परचेज अकाउंट में दिखा दिया यानी कि एज एक्सपेंस के तौर पे, तो ये हमारा प्रिंसिपल का हो जाएगा. फिर एरर ऑफ कमीशन में भी हमारे दो पार्ट है, या तो आप उन्हें पार्शली ओमिट कर जा रहे हैं या फिर कंप्लीटली ओमिट कर जा रहे हैं. Omitted an entry completely from the subsidiary books, that is trial balance agree. Omitted to a post ledger account from the subsidiary book and trial balance will not agree. Error of commission. Compensating error, एक error दूसरे को खत्म कर देते हैं. Error of commission के अंदर आपके यानी कि जो भी wrong amount होता है, फिर wrong casting कर दिया या फिर रॉन्ग अमाउंट इन लेजर डाल दिया आपने पोस्ट करने पे, पोस्टिंग करते हुए अमाउंट ऑन दी रॉन्ग साइड कर दिया, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग ऑन एन अकाउंट. ये सारा इस केस से हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हमारा मैच नहीं हो पाता है. Steps to locate error. Even if there is a only very small difference in the trial balance, the error leading to it, the most located and rectify a small differences may be the result of a number of error. The following steps will be useful. Located error. The two column of trial balance should be total again, and if in a place of the number of the amount only one amount has been written in the trial balances, the list of such accounts should be
checked and total again. The list of trade receivable is example of the trade receivable balance is derived. But it should be seen in the cash and bank balances have been written in the trial balance. फिर ऐसे आपका दे रखा है the ledger account should be the balanced against. फिर the casting of subsidiary books should be checked again, and especially if the difference that is rupees 100. Rectification of error. Error should never be corrected by overwriting. If immediately after the making an entry, it is clear the error has been committed and it may be correct neatly crossing out and the wrong entry, making the correct entry. ये आपको सारे यानी कि इसको एरर को हमें कैसे ठीक करने इसके बारे में सारा लिखा है। इसको इसी चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन एक कर लेते हैं। Illustration 1. इसमें बता रखा है correct the following error without opening suspense account. A sales book has been total short 100. अगर ये हमारा 100 से कम है तो उसके अगर हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करे तो उस केस में हमें एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखना होता है कि ये जो जैसे सेल्स बुक है वो टोटल में 100 से कास्ट है तो इसको बढ़ा देंगे. सिंस द सेल्स बुक हैज बीन कास्ट 100, the sales account has been similarly credited to 100 and the correctly entry is credit sales account by 100 by the wrong totaling of the sales book. अगर वही अगर हम सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन करते तो उस केस में हमारा टू सेल्स हो जाता और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाता. अगला है गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय ग्रेन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर. इसको कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करा. अब इसको रेक्टिफाई मतलब ओमिशन रिकॉर्ड नहीं करा है तो रिटर्न इनवर्ड्स account has to be written inward account has to be debited to the green of company and credited the entry. जैसे ये दिखा रखा है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी क्योंकि ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं कर रखा है इसलिए ये डबल एंट्री यहाँ पे सस्पेंस इसलिए नहीं है. फिर थर्ड है आपका फर्नीचर purchase from Gulab and Brothers 1000 has been entered in the purchase day book. उसको यानी कि एंटर कर रखा है तो यहाँ पे by this error purchase has been debited 1000 whereas the debit should be have made to the furniture account and the correct entry will be passed furniture account debit to purchase. डी पार्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 lakh has not been entered in the discount column of the cash account of G Mohan and Company has however been correctly posted. In this case account of the customer has been correctly posted. The discount account has been debited 18 lakhs short since it has been omitted from this discount column on the debit side of cash book. The discount account should now be debited by the entry to omission of entry in the case of rupees 18
बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अगला हम टॉपिक करेंगे। थैंक यू।